Good morning, and first of all, thank you very much, all you youngsters, and more thankful to your esteemed college, university, as I had been here for many occasions, but most of them were pretty dry. MBA, engineering, and all those things, management. I'm very happy when Sumit called me for this particular activity and this particular sharing. The best part of school name Forest or Wildlife is there is no lecture, no assignment, no field trips and that kind of terminology. There is only sharing and learning. So first, let me tell you, this is one school which I personally called as a school named Wildlife or Forest. You just recited our national anthem, Jana Gana Mana, which mentions all of states, locations, and diversity of our rich country. We are so fortunate. The beauty of this particular school named Wildlife is it has got branches in every village and every college, every city and every town of this country. Another aspect is no entrance exam is needed in this school. No slogging and no classes and JE and that kind of rat race for to enter into School of Wildlife. You can just join. You can just join. No fees, nothing. Fees are there, but I will explain it how you pay them later. So when Sumit said कि sir आप lecture का subject choose किए, so I thought कि this should be the best subject because see you all must be from different categories, different trades, different branches, and just like our country is divided on many of these kind of barriers. In academics also we get divided onto engineering, pharmacy, again in engineering, civil, mechanical, and all those things. But in wildlife, everybody has got same syllabus. Everybody has got same learnings. उसे क्या लेना नहीं लेना, that school don't tell us. We have to decide that, and that's why I always say this is the next. This is the best school. So coming to the today's subject, again let me tell you frankly, in this school everybody is student forever. You are in an institute जहाँ से someday we all will pass out. We will start working on our own fields, and then we will use our knowledge to earn some money, अपना bread butter कमाने के लिए, career, whatever you call it. But in this school, everybody is student forever, and every time it will tell you something new whenever you go to the school. And again here there are no barriers. जंगल के school के लिए कोई barrier नहीं. You can go anytime, any day, attend the classroom, take over what you want, and improve yourself. That's the way. So, as I say, this particular aspect is applicable to everybody in any school. See, you will get admission here in Indira and you must be of any trade. आप लोगों ने यहाँ क्या सीखा वो सिलेबस तय करेगा, but वो सीख से what you learn and what you practice, school has got no control on that. Same is applicable to wildlife also. Anybody is, as I told you, anybody is welcome in wildlife school. कोई भी welcome है यहाँ पे. But उसके बाद आप क्या करते हो उस knowledge का, that depends upon totally you. This is very important aspect which links to your academics also. क्योंकि all you guys are here in different branches. You must be thinking about कि यहाँ से सीखी ये बनूंगा वो बनूंगा, that kind of stuff. But again, it's about utilization of that knowledge which will decide whether your success is permanent or temporary. Same, forest में भी आप जाते हो, कुछ देखने के लिए जाते हो. How many of you have been to forest, actual forest, wildlife? कितने लोग आप में से जंगल में गए हो? Not a single hand. Surprising. Must be pretty steady. Study में पूरा टाइम बिता दिया. Okay, how many of you are from Vidarbha or MP or that kind of region? Okay. विदर्भ में कहाँ से या एमपी में से? वाशिमला तर लागून जंगल आहे लेका, isn't it? मग तू गावाच्या बाहेर पडला की जंगल लागतं. But then you can't say की जंगलात नाही गेलो. So I was fortunate. I am from a small town in Vidarbha.
I did my diploma from Amravati, and my town near Akola, where still tiger and sloth bear came within the range of our town. My school trips were in Melghat, so that's how I started connected with forest. And in Pune also, those who are from Pune, I will tell you, Pune has got wonderful wildlife around. I'm not talking about night wildlife. I'm talking about actual wildlife. So don't say that ever कि मैं जंगल नहीं गया, जंगल वही था. We never tried it. Everybody, we are all blessed with some part of wildlife. Even if you go outside your campus, within your campus, there are many trees, and those all trees are forest. A single large tree is a forest. Understand? Basically, when you take admission to this particular school named forest, understand your school. First, understand what course you are taking admission. Forest doesn't necessarily mean Project Tiger or something like that. Ghana, Tadoba. Forest means a life cycle where every species can survive on its own in natural form. So even a single large banyan tree can be a forest. उसके ऊपर इंसेक्ट्स रहते हैं, उसके ऊपर मधुमक्खी रहती है, उसके ऊपर देयर कैन बी गिलहरी, सो मेनी थिंग्स, एंड फॉर दैट एंटायर एनिमल्स एंड एंटायर दैट स्पीसीज, दैट ट्री इज देयर फॉरेस्ट. So this is how you understand this particular school, and this is the first step of the school. Next. Now, coming back to the 10 important lessons which will be helpful to you in your career, provided you understand it, what I am saying, and you understand it in right spirit. Those, you all are here, you are already taken admission to the school named Wildlife, because otherwise you wouldn't have been here, and I am really happy for this particular step you are taken. So, first lesson I have learned, I don't say तुम्हारी generation or मेरी generation. There is, again, as I said, in forest there is nothing like that, but when you go to the actual world, there will be always your seniors who will be telling you, यार तुम्हारे सारे जनरेशन में बकवास है, ऐसे ही चलता तुम्हारे यहाँ में. Why they say that? Why that gap is there? Because most of us goes, the biggest curse, many senior managers, when I talk to them in my business meetings or commercial meetings, the biggest problem senior managers have to handle their staff or their juniors is, यार जो मन में आया करते हैं. मैं व्हाट, किसी को भी पूछो ऐसा क्यों गया, नाही मला असं वाटलं. फ्रँकली मला असं वाटलेलं माझ्याकडे इंग्लिश मध्ये सांगायला शब्द नाही आहे. I just felt, that's why I did. So first lesson I learned from forest is, in forest nobody does, not a single animal behave on its feelings. Every smallest thing in the forest has got some purpose, some logic. That is the first lesson when I started going to the forest I learned. I will show you why. Next. These all photographs I have clicked myself. Not that I am a great photographer, but I use usually my photographs because to tell you, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि फॉरेस्ट में अच्छे फोटोग्राफ सिर्फ सेलिब्रिटी फोटोग्राफ्स को मिलते हैं, जिसके पास बड़े बड़े गियर होते हैं, ऑल दोस कॉस्टली इक्विपमेंट. इट्स नथिंग लाइक दैट. फॉरेस्ट, आई विल टेल यू स्मॉल थिंग. मोदी साहब जब रणथंभौर गए थे बीच में, तो पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जान पसीने पे छूट आई थी, क्योंकि उनको टाइगर नहीं दिखा. टाइगर डोंट कंसिडर कि मोदी साहब आए हैं तो मैं देखूं उनको. जब तक वो नहीं दिखाना चाहता खुद को. सो सवेरे 3 बजे द रेंजर फाउंड वन टाइगर. नाउ द प्रॉब्लम इज, सवेरे 3 बजे प्राइम मिनिस्टर को कौन उठाएगा, सर टाइगर आया करके दिखाना. बट मोदी साहब को देखना था टाइगर, उनको भी मालूम था. फॉर्चुनेटली अपने प्राइम मिनिस्टर इज दैट अंडरस्टैंडेबल कि वो जंगल आया है, जब तक टाइगर उसे देखना नहीं चाहेगा वो देख नहीं सकता टाइगर को. सो ही वॉज अवेक. द गाइज टोल्ड हिम कि सर टाइगर दिख रहा है. देन मोदी साहब जीप में बैठे एंड मोदी साहब को टाइगर दिखा. दैट मीन्स इन फॉरेस्ट इवन द टाइगर ही विल नॉट. आप लोगों में से ज्यादा कुछ लोग जंगल गए हो नहीं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि कितने लोगों ने टाइगर जंगल में देखा है. Anybody? No. You are not been to forest, so there no question asked. Okay, even in zoo? Ranthambore. Okay, you have seen a tiger?
Was it growling? Like it was literally coming in front of the jeep and it was But was it growling? Okay. How many of you have been to zoo to see a tiger? School में, बचपन में? That's, yeah. So now here is the reason. Good. Even in zoo, how many of you have seen the tigers? The tiger was growling. No, that simple reason is a tiger don't growl without purpose. अपने tiger का मतलब है growling and like that, nothing. If tiger starts growling, entire forest will know tiger is here and he will remain hungry forever. Because if tiger starts growling and making people know his presence, his prey will run away. So that's why a tiger doesn't growl. Next. These are deers, they are happily grazing over here. Okay. Then next. These are monkeys. Usually क्या बंदर सरी की हरकतें करते हो हम लोग बोलते हैं एक में को. So next, but they are not doing. See the powerhouse. This is we call as a one-tonner. This Indian gaur is a one-tonner and it can topple. Guys, your tiger is also here. Dr. Dayanand. So you can please focus. So a bison, it don't dash. It has got a power and it can literally strike off anything which comes into the road. But it most of the time it moves silently on the road. Why? Next. The all answers to all these pointers is nobody in forest behaves something without purpose. मुझे लगा करके मैं दहाड़ू ऐसा टाइगर नहीं बोलता. मुझे कुछ काम नहीं इसलिए मैं कूद रहा हूं ऐसा बंदर नहीं बोलता. मेरे पास बहुत ताकत है. That's why I don't dash everybody. Indian gaur doesn't say it. So remember this lesson. Forest system survives at peace because everybody does something for the purpose. Tiger growls only when he wants to make its presence shown to the forest. Only when he wants to call his mate, only he wants to threaten somebody, only he wants when the forest should listen to him, then only it grows. Unless and until you don't cross the path with the Indian gaur, it won't attack you and it won't do you harm. So this is the first purpose, first thing which you should learn from the forest. कि कोई भी बात मुझे लगा करके मत करो. Understand the purpose why you have got talent, you have got power, you have got everything with you. मुझे सिर्फ भूख लगी है इसलिए मैं खाता हूं. यहां तक ठीक है. मुझे रास्ते में मैकडॉनल्ड का शॉप दिखा इसलिए मैं खाता हूं ऐसा नहीं होता. So everything if you go later on when this all you will apply to your career also. पर्पस के बिना कुछ मत करो. ये लेसन यदि आप स्वीकार करते हो, it will help you to reduce your wastage of energy. Next. This is the most important aspect which I have personally found. Discipline, which, see, all these things your teachers will be telling you, all these things your parents will be telling you, सवेरे जल्दी उठो, अपने काम खुद करो, टाइम पे सब करो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे स्टडी करो. बट उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो every animal in forest, nobody is there to tell you this. If you want to survive, you have to be disciplined. Otherwise, you won't be able to survive. Next. See, यहाँ पे खाने का टाइम रहता है हर चीज का. Right from a smallest tiny kingfisher, is a oriental dark kingfisher. This you don't get into central Indian forest. Why I said wildlife of Pune? This you find around Tamini Ghat. In any herbivorous like deer and all those things make their lifestyle. जैसे आप लोगों में से कई लोग रात को ज्यादा देर तक जागते होंगे, मुझे मालूम है, मेरे भी बच्चे जागते हैं. That is different part. But if deer start keeping awake at late night and started roaming in late night, they will be prey to the tiger. Because tiger का time खाना खाने का या hunt करने का रात का है. So again, if tiger starts hunting in the daytime, he won't be able to hunt. Because at that time deer are awake. They will easily spot him. All these things, everything depends upon discipline, and discipline leads to fitness, which is most important for survival in the forest. Same thing is applicable for us in the city life also.
If you are not fit, however intelligent you are and however degrees you are under your belt and whatever fat package you will be getting, it's useless. Today, if I am this, I am deliberately telling you because I am sharing my experience in both capacities as a wildlifer also, and I am a employer also to my team or leader also to my team. I always tell to my team, आप sick leave मत डालो, casual leave डालो. Sick leave का मतलब you are unfit, and fitness comes only by discipline. This forest tells you. आपने again coming back to the forest, zoo में से tiger, zoo में tiger देखो, and the same time you may not have gone to forest, but you can watch on Nat Geo and not even the photograph which I show. Wildlife में का tiger, जमीन आसमान का फिटनेस में फर्क है. दो जू में जो टाइगर है, he gets डेली फूड एट हिज प्लेटर, जैसे हम लोग स्विगी और जोमेटो करते हैं. वाइल्ड लाइफ में टाइगर को कोई किंग रहेगा नाम का, कोई जोमेटो स्विगी नहीं देता उसको. He has to run around 30 times when a tiger tried to hunt, once he became successful. So imagine how much fit he has to be there to get that thing. Next. In the forest, again, this is one important aspect of learning. Curiosity, they say, for humans, is part of innovation. Without curiosity, there is no innovation. You must be knowing this in your management things also. Unfortunately, in forest, curiosity is curse. There are interesting things. Curiosity is good, but what you are curious about, what you should are, where you are poking your nose. Same way in working, जो तुम्हें काम दिया है, जो तुम्हारा पर्पज है, जो तुम्हारी डिपार्टमेंट है, जो तुम्हारा पोजीशन है, if you start ignoring it and being poking your nose around the things which are not part of your game, you will land into trouble in business world also. Same way in forest also. Do you know how a tiger kills monkey or how tiger hunt monkey? Monkeys are very curious creator. They give alarm calls when they saw tiger. और जब tiger जमीन पे दिखता है, these monkeys, what they do you know? They keep looking at the tiger, and if the tiger circles the tree, they will also circle the tree on the top, just to keep curiously what is tiger क्या कर रहा है. 4 चक्कर मारने के बाद एखादे मंकी का बैलेंस चला जाता है, it drops down and tiger kills it. Curiosity is a curse, but that is how nature is, and this is unless यदि ये होता नहीं था तो हमें कैसे समझता था कि curiosity is a curse. Next. Again, monkeys and sambar deers, they two are most important alarm whistleblowers of forest. You can tell that. Here, the sambar deers importance in forest is, जब तक टाइगर दिखता नहीं, सांबर डियर अलार्म कॉल आवाज नहीं करता. और दूसरा प्रॉब्लम है, जब तक टाइगर दिखना बंद नहीं होता, तब तक सांबर डियर चुप नहीं बैठता. Now it is good for others because others know कि जब तक सांबर चिल्ला रहा है, there means tiger is there. Unfortunately, tiger knows कि where sambar is. So sambar is the tiger's most dear prey and most easy prey, क्योंकि जब तक दिख रहा है तब तक सांबर चिल्लाता रहेगा. Curiosity, nothing else. But then it becomes prey. Now the curiosity is dangerous for biggest predator like tiger also. You can see this small tiger cub. Okay, like all cubs, it is also curious about many things. And unfortunately, in Indian forest, 20 to 30% tigers die young in this age. This is hardly 10 months cub. Recently, I got this photograph. They jump to anything which they are not knowing, and in that they jump accidentally on snake. So snake bites them and they die. They jump into the deep water. Every tiger is a natural swimmer because it's a cat animal. But then strength is also important. You can't swim in a deep water without strength. But unfortunately, curiosity kills many tiger cubs. They get electrocuted. They cross the road and they become road kills. So in forest, curiosity is a curse. Same way in our own field also. जब तक हम लोग अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में नाक नहीं अड़ाएंगे, तब तक हम सेफ रहते हैं. हमारे प्रॉब्लम तब चालू रहते हैं जब अपना काम छोड़ के दूसरे काम में टांग अड़ाते हैं. नेक्स्ट, लाइक स्पाइडर वेब्स इन फॉरेस्ट, व्हाट स्पाइडर डज इज, ही
Now imagine, there is a spider web. We all know there is a web, but still insect get attracted to that. Why? Curiosity. Spider specifically make that web such that it shines. In sunlight, when sunlight comes on that, it shines. It's a sticky thing. It has got another use also that I will explain later. And then the insects get attracted to that shine and they get stuck to that web. अपने आप Ponzi schemes, and every day you open a paper and high interest rates and you get returns and all those things. Curiosity. You just tap that WhatsApp number, even it's unknown, and you know what happens to that. Next. Like, not all flowers in the wildlife are beautiful and good. Deliberately, the most poisonous flowers in the wildlife are most exotic, because then only they can catch. Next. Chameleon, we all know, it attracts its prey by changing its color. Next. In the forest, this is aspect which you all will be needing in your career also. Live by your strength. आपके जो strengths है उससे आप जियोगे तो ज्यादा दिन तक जियोगे और सक्सेसफुल रहोगे. Next. Like this reel you must have seen. How many of you? Most of you must be on Insta. But this particular reel of a honey badger encountering with tiger was this month's October month's most seen reel on Instagram. Okay, honey badger is a small animal, very rare, very rare. In my 30 years of wildlife, I have never seen a honey badger alive in forest because it's a nocturnal animal. Nocturnal means जो सिर्फ रात को घूमता है. Okay, it moves in dense forest only at pitch dark. Unfortunately, this honey badger came on the road in a daylight in Tadoba recently. The tiger also never seen honey badger. So you can see the look. This is not a look of a predator who is looking at kill. Generally, tiger इतने प्यार से अपने kill की तरफ नहीं देखता. No predator looks. Like your boss will never look at you like this in future. But tiger has never seen honey badger. Honey badger has never seen tiger. The next shot was, it is a clip. You can, after my lecture, you can go on Insta and Tadoba or honey badger, any hashtag डालो, ये मिल जाएगा video आपको. The poor honey badger tried to charge on tiger. He has never seen tiger. For a second, tiger stepped back because he also has never seen honey badger. कि क्या animal है, क्या अपने को कर सकता है. But then when he realized कि ये कुछ नहीं कर सकता अपना, एक झटके में उसने मार दिया उसको, फेंक दिया, खा लिया होगा. What is the lesson I learned by honey badger? Ki boss, you are a nocturnal animal. Why you are moving in daylight on road? That too in a forest. Ek. Another thing, when you get first hint of a tiger, you can't see also. Uski eye level dekho, tiger ki level dekho, and you are charging on some enemy which you don't know what it kind of thing. It's like Bangladesh B team taking on South Africa main team. No point. Retreat is the best way. So these are the things which you learn from forest. If you learn to live by what your strengths are, understand that and live by that, you will always live longer. Next. Another aspect, like deer, it is beautiful, it can run fast, but look at the background behind. If it starts wandering into the inside of this forest, it is vulnerable because it can't see through in the dense forest. It can't run fast in that forest because of its nice horns. So if a deer wants to survive longer, उसको open land में ही रहना उसके लिए ज़्यादा स्वाभाविक है और ठीक है. This is another aspect which you learn from observing wildlife. Next. This I recently clicked in my Tadoba trip. The wild boar, jungli suar, the wild boar was weighing more than tiger. This is a tigress which was pregnant. In the pregnancy level, tigress is very careful because if she get injured while hunting, three things happen. She can't hunt. If she can't hunt, she can't feed the cubs in her belly and she will die because queen ये सिर्फ टैग है. क्वीन है करके उसे कोई मैटरनिटी में लेके नहीं जाने वाला वहां पे, उसको खुद करना है सब. तो still in front of my eyes, she could kill this wild boar because the wild boar was thinking कि I am most powerful
इट मस्ट बी नोइंग कि बाजू में टाइग्रेस है, बट इन हर सेंसेस टाइग्रेस वुडंट हैव डेयर टू अटैक वाइल्ड बोर एंड किल हिम. द वाइल्ड बोर वाज इग्नोरेंट. ही वाज स्टैंडिंग इन ओपन लैंड एंड नॉट लुकिंग बिहाइंड. इन वन फ्लैश, in just one flash, tiger saw the opportunity, hold him by his neck and killed it. This is where again, had the wild boar been its senses and standing facing towards the forest, the tigress wouldn't have dared to attack him. This is how you say कि overconfidence. We all are overconfident. Hey, हो जाएगा. Never go by overconfidence in forest. Never underestimate कि सामने वाला अपने से वीक है या कुछ नहीं हो पाया, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता. These are the lessons forest teaches us silently. Next. Then same way, tiger always like to hunt these animals. They are supposedly tasty, mongoose and porcupine, but they are not its prey, and most of the time tiger like animal also get injured in hunting these small animals. कोई जरूरत नहीं ना. बट देन दैट्स सी, ये सब नहीं होता था जंगलों में, तो हमें कैसे पता चलता था कि क्या सीखना है जंगलों से. मैं हरदम बोलता हूं, दुनिया में मूर्ख लोग नहीं होते तो शानों की कीमत ही नहीं होती. सेम वे इन फॉरेस्ट. नेक्स्ट. एंड दिस इज वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस. पूरे जंगलों में ग्रीडीनेस, मैंने आज तक ऐसा टाइगर नहीं देखा जो 3 दिन का खाना स्टोर कर रखता है फ्रिज में. जिस दिन भूख लगी है उसी दिन इट विल हंट, इट विल किल एंड इट विल बी हैप्पी. मैंने ऐसा भी टाइगर देखा नहीं कि 10 हिरन मार दिए, एक खा लिया, 9 बेच दिए बाकी टाइगर को. आई हैव नेवर सीन दैट. नो ओवर किलिंग. व्हेन आई कैन किल 10 डियर एट ए टाइम, आई विल जस्ट किल 1. ये जब तक हम नहीं सीखते तब तक इस अर्थ का कोई खरा नहीं. And then you will say कि that's what's the difference between us and animals. We are humans, we are most developed species, we are intelligent. हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. लेकिन at the same time कहाँ रुकना है, ये लाइन भी हम लोगों को ही मारनी है. Otherwise ये लेक्चर की जरूरत नहीं, ये क्लब की भी जरूरत नहीं. Everything will be happy. Everything, all are getting their own choice, isn't it? So this is what we have to learn. Greed is our most biggest enemy. Next. This photograph I have clicked and probably, okay, I am not going to say about the prices and all those things, but this I like myself. पूरे वाइल्ड ये डियर भरे हुए थे और इसमें से ये टाइगर रास्ता निकल के आ रहा था. उसने एक भी डियर की तरफ देखा भी नहीं, एक भी डियर की तरफ देखा भी नहीं. एंड इफ यू सी, इवन डियर्स आर रिलैक्स बिकॉज दे नो कि इसका पेट भरा हुआ है, ये हमें कुछ नहीं करेगा. दिस इज हाउ लाइफ शुड बी. दिस इज हाउ आप लोगों ने ये सारा नेचर क्लब जो ज्वाइन किया है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ इट? क्यों किया आपने? आपके पास बहुत ज्यादा टाइम था? दैट्स नॉट इट. यू हैव टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. यू हैव टू पास ऑन दिस मैसेज टू अदर्स. सो दिस इज द मैसेज. जितना मुझे जरूरी है, जो मुझे चाहिए उतना ही मैं करूंगा, तो ही entire future of earth depends upon all these type of things and philosophy. This, unless and until you don't learn from forest, you will never understand. Because none of our syllabus teaches it. We all work for biggest fat package. Nothing wrong about it. But कितना fat? और वो fat package मिलने के बाद क्या? This is there. Somewhere we have to mark our own line. Next. And coexistence. एक fortunate चीज, मैं भी हॉस्टल पे था. आई हैड स्पेंट माय बेस्ट ऑफ द टाइम इन माय इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा डेज इन हॉस्टल. हॉस्टल लाइफ टीचेस यू कोएग्जिस्टेंस. पार्टनर का कितना भी गलत आदतें हो, गलत हैबिट हो, पार्टनर कितना भी नापसंद हो, फिर भी रहना तो पार्टनर के साथ ही होता है रूम के. सो वी स्टार्ट लिविंग इन कोएग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम द हॉस्टल डेज. बट एट द सेम टाइम एंटायर फॉरेस्ट survives on coexistence, which is our future, which should be the backbone of your this club. स्कूल ऑफ फॉरेस्ट का मतलब ही है कोएग्जिस्टेंस. आप यदि आने वाले कल में रहना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो साथ में रहोगे तो ही टिक पाओगे. हाउ? नेक्स्ट. वन ऑफ द बेस्ट कोएग्जिस्टेंस इज डियर एंड मंकीज इन द फॉरेस्ट, इन एनी इंडियन फॉरेस्ट और एनी. दिस इज द कोएग्जिस्टेंस. डियर को दूर का नहीं दिखता, बट डियर कैन स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंस. टाइगर. बंदर को दूर का दिखता है, बट बंदर को स्मेल नहीं आता.
Always you will find in Indian forest deer and monkey staying together. Monkey पेड़ पे ऊपर बैठा रहता है एंड मंकी को जब से टाइगर या लेपर्ड दूर से दिखता है वो चिल्ला के डियर को अलर्ट करता है. थिक फॉइलेज है, बारिश के दिन है, घास भरा हुआ है, टाइगर मंकी को दिख नहीं सकता, बट टाइगर की स्मेल आती है. डियर अलार्म्स monkeys and both save their life. That is how coexistence works in the forest. And this coexistence doesn't only stop at alarming tiger. Summer season में when grass is dry, monkey ऊपर से पेड़ के पत्ते नीचे फेंकता है and deers खाते हैं. And जब पूरे पत्ते भी सूख जाते हैं, सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट में पत्ते भी सूख जाते हैं, कहीं कहीं गीला ग्रास रहता है नीचे, तो मंकी को जमीन पे आके खाना पड़ता है. एट दैट टाइम डियर कीप वॉच सो मंकी कैन ईट कंफर्टेबली. दिस इज हाउ एंड दिस इज एक्चुअली हैपेंस इफ यू गो अगेन एंड अगेन एंड दिस इज हाउ टुगेदर यू ऑल्सो यू सर्वाइव. नेक्स्ट, लाइक अनदर थिंग इज दैट इफ यू आर वीक you live by pack, so you can alert each other, you can protect each other. Next, anybody, I'm sure this is a paradise flycatcher, one of the most beautiful bird. Anybody can tell it is sitting on its nest. This nest actually shines and very स्ट्रॉन्ग. मैंने मेरे गाइड को पूछा कि ये ऐसा चमक क्यों रहा है, मैंने आज तक किसी बर्ड का ऐसा चमकता हुआ नेस्ट नहीं देखा. तो बोले सर गेस करो किससे बना ये. आई फेल्ड कि इसको तो कोई फेविकॉल लाके नहीं देगा, फिर ये कैसे बनाया. बोल कैन यू इमेजिन ही टाइज हिज एंटायर नेस्ट एंड मेक इट वाटरप्रूफ. स्पाइडर वेब के धागों से वो अपना बुनता है, नेस्ट बुनता है. इमेजिन, एंड इफ यू रिमेंबर माय अर्लियर स्लाइड, स्पाइडर वेब इज स्टिकी एंड स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी. दैट्स व्हाई दिस इज लाइक शाइनी, स्ट्रॉन्ग, वाटर टाइट. नाउ इमेजिन द कोएग्जिस्टेंस. जंगल से यदि स्पाइडर खत्म हो जाएंगे तो इस बंदे का घर बांधना भी बंद हो जाएगा. So I have given you a very small example. जंगल में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है. एंड जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी थी अवतार, इफ यू रिमेंबर दैट ट्री ऑफ लाइफ, द कंसेप्ट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. वो यहां जंगलों में से ली गई है. Even that kind of, even Hollywood learns from wildlife and take it ahead. So it is that जंगल में हर चीज किसी ना किसी तरह से एक में से जुड़ी हुई है. That is the best example of coexistence. हमारे साथ भी we are also part of that system, but we have grown so much above everything कि हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे सियाना कोई नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं. It's not that. You are connected with everything. Everybody is connected with you. Mind it. Next. Like even predators like wild dogs, they are predators, but they are weak. एक अकेला वाइल्ड डॉग भिड़ने जाएगा तो एक हिरन भी उसको लात मार के भगा देगा. लेकिन when they hunt with pack, hyenas, they are small predators, but they also need to be in pack. Only someone like tiger, again, he also coexist because entire life cycle exists around it. That's why tiger, मैं अकेला टाइगर हूं इसलिए मैं जिंदा रहूंगा, हवा खा के जिंदा नहीं रह सकता. पानी पीता था, बाकी सब लोग पीछे नजर रखते थे. That's human. But this is how you behave in forest. Next. जो सबसे बड़ा गौर होता है इंडियन गौर, वो अपने ताकत के बलबूते के ऊपर लीडर नहीं बनता हर्ड का, वो डेयरिंग के बल के ऊपर बनता है. दिस गौर टेक्स ऑन टाइगर ऑल्सो टू प्रोटेक्ट दिस हर्ड. Obviously tiger is afraid of that size, but then to confront a tiger, to protect your herd, that is what makes it leader, not just power or size. This is what forest teaches you. Next, again there are alpha male in pack, in dogs, in wolf. All these they become leader
by their courage, by their attitude to face the danger in the forest ahead. Kabhi bhi, when pack of wild dog is hunting, pack of wolf is hunting, alpha male is always ahead. He is ready to take danger. Forest में उसको मालूम नहीं आगे क्या आने वाला है. आप डियर को चेस कर रहे हो और सडनली टाइगर कैन कम इन बिटवीन एंड यू विल बी द प्रे, देन बिकम अ प्रेडेटर. बट स्टिल ही गोज. अपने आप तुम जाओ आगे, मैं पीछे जाता हूं, क्योंकि मरने वाला पहला जो होगा वो मैं नहीं रहूंगा. बट देन इट वोंट बी योर लीडर. यू वोंट गेट रिस्पेक्ट, यू विल गेट दैट पोजीशन, नॉट रिस्पेक्ट. नेक्स्ट, coming to the closure part of it, in the forest, the best way, same in the business, same in the career, same in the commercial life. Enemy may not be there, but our competitor is our enemy in a way. In our business, if you don't understand your enemy, competitor, you will be doomed, because you don't understand your competitor what he is doing. Same way in the forest, तुम्हारा enemy कौन है ये समझ के जो जीता है, वही फॉरेस्ट में ज्यादा दिन जीता है. And as I told you, learning all these learnings, अभी आप लोगों को इंस्टीट्यूट से, प्रोफेसर है, टीचर्स है, और पेरेंट्स आर देयर, दे टीच अस एवरीथिंग. फॉरेस्ट में सिखाने वाला कोई नहीं रहता. फॉरेस्ट में उस जानवर को थोड़ा बहुत बचपन में, वॉट एवर इट्स पेरेंट, स्पेसिफिकली मॉम हैज टॉट अबाउट सर्वाइवल स्किल्स, उसके बाद every animal, right from an insect to avian to bird to fish, they all have to learn the survival on their own. और उसके लिए what you have learned, you have to practice. That is what forest teach me again. For me, most personal gain जो मुझे फॉरेस्ट से हुआ है is I have learned to become patient. पेशेंस इज द की इन द फॉरेस्ट, बिकॉज फॉरेस्ट में आपकी मर्जी से कुछ नहीं करता. जैसे मैंने बताया कि our prime minister has to wait tiger to show. That teach you patience. And same way that has helped me a lot in my latter life. मैं 5-5 घंटे एक टाइगर एक जगह पे सोया है. I kept on waiting to click its one photograph. उसके बावजूद वो टाइगर नहीं निकला कई बार, and I have to go empty handed. But I was satisfied and I was not irritated, I was not agitated. क्योंकि no use. मैंने कितना भी चिल्लाया, however I do, tiger was not going to me. Same way it happens for a bird, for a deer to jump. So many things keep on happening in the forest. Everything has got its own time and you have to be patient. Same thing happens in your life also. If you learn patience, guys, you learn living is all I can say. Next. Now coming back to the important aspect of मैं क्या कर सकता हूँ फॉरेस्ट के लिए. It's a responsibility also. If that here is the fee of this school. This school don't demand you anything. इसके लिए डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, फीस भी नहीं है ईयरली. You don't have to book anything. You don't have to buy nothing. But then it's our responsibility कि आप इस स्कूल ने आपको इतना सिखाया है. Again, as I say, you already started paying back to the forest, paying back fees of the school by joining this club, by starting this club. But the fees is what I can do for the forest. Forest has given me so much of knowledge. Forest has given me so much of things. What I am going to do? So this is what I can do. Go to the forest first. Next, help people who are living in the forest. आप लोग बोलते हो सेव टाइगर. सेव टाइगर मतलब टाइगर को गोद में लेकर ना घूम सकते. We can't. Those people who are around the tiger, protect them, strengthen them, support them. That they will be saving the tigers. That you can do. Like from donation, donating your used clothes, good condition clothes, shoes, everything is welcome because poverty is the problem. यहाँ लेक्चर देने के लिए मुझे रिस्पेक्ट मिलता है. वहां जंगलों में रहने वाले आदमी को कोई किसी को पता भी नहीं वहां क्या है करके. Next. Now last few good photographs I have got and few moments. Like I said, in forest you have to be careful on every step because next step पे क्या आने वाला you don't know. There can be a big sloth bear coming across, a snake awaiting for you. One has to be careful
on every step you are taking into the life. Same applicable to our own life also. Next, as I say, किसी भी टर्न पे टाइगर सामने भी आ सकता है या किसी भी टर्न पे टाइगर पीछे भी हो सकता है. You have to be alert on both ways. Do you know the best part of this is, पूरे जंगल छोड़ के when I saw कि एक वायर के ऊपर इस बर्ड ने घोंसला बनाया है, so I asked कि यार जंगल में पेड़ छोड़ के यहाँ क्यों बनाया? बोले यहाँ सबसे सेफ है वो, क्योंकि जंगलों में वो जब घोंसला ऐसे बनाएगी तो ऊपर से स्नेक आके घोंसले के अंडे खा जाएगा. स्नेक कांट क्लाइम ऑन दिस वायर, इलेक्ट्रिक वायर थी, so she found it safer. Sometimes your mechanical intervention can be beneficial for some species also, but then again you are intervening because snake को उसका खाना नहीं मिलेगा, snake will die. You are breaking the chain. So one has to be very much balanced while intervening into the forest. Next, these are the worst thing. Why I say जंगल के जानवर सारे दुश्मनों से लड़ना, फेस करना सीख सकते हैं. एक दुश्मन को वो नहीं समझ सकते. यू एंड मी, ह्यूमंस आर द वर्स्ट एनिमी ऑफ वाइल्ड लाइफ. इन टाइगरों को सब कुछ सिखाया उनके माँ ने. रोड क्रॉसिंग करना नहीं सिखाया, रेलवे इंजन से दूर रहो ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखा सकते उनको. दैट इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू ऑल गाइज, एंड दैट इज व्हाट यू विल बी गिविंग बैक टू द वाइल्ड लाइफ नेम स्कूल as your learning fees, is what I wanted to tell you at the end. Next, as I say, जंगलों में आग लगाना, जंगलों में उनका हैबिटेट खत्म कर देना. Next, this photograph when I first saw in Ranthambore, this is from Ranthambore, मुझे लगा उसने कोई बगला मारा है सफेद कलर का, उसके मुंह में दिखा टाइगर के. Closely I saw it was a आटे की कैरी बैग. Somebody must have left it around the villagers and all this thing. Poor fellow didn't understand what it is. Imagine वो उसके दांत में अटक गया, डेंटिस्ट नहीं है उसके लिए, मर जाएगा. So all these things, your and my responsibility is there to take. पूरे वाइल्ड लाइफ के बाजू बाजू के विलेजेस में ये चक्कर है. This next, and outcome is this. अपने बिस्लरी की बॉटल है 5 लीटर की, उसका क्या हो गया देखो बेचारे का. पुअर फेलो मस्ट हैव ट्राइड टू ड्रिंक वाटर एंड जान जाएगी उसकी. नेक्स्ट, दीज आर ऑब्वियसली एयर. नेक्स्ट, एंड आज हम लोग वी आर लकी टू सिट इन द AC क्लासरूम एंड अंडरस्टैंड एंड वॉच दीज इमेजेस, फोटोग्राफ्स. ये सभी लोग जंगलों के खिलाफ. ये औरत जो यहां है ये महुआ के फ्लावर्स कलेक्ट करती थी समर में. सो व्हेन आई क्रॉस्ड, उसके पहले उसके सामने टाइगर्स के पगमार्क थे. तो मैंने उसको पूछा कि भाई टाइगर, बोले अब भी गया. बोला फिर आपने क्या किया? नहीं, अंदर भाग गई जंगल में. वो चला गया, वापस आई, स्टार्टेड प्लिकिंग अप फ्लावर्स. उसके ऊपर उसका पेट है. इमेजिन आप लोग रास्ते पे चल रहे हो और सामने टाइगर अब भी गया और आप वापस वो रास्ते पे जाने लगा. आप लोगों को टू सेव टाइगर, लव टाइगर, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी नाइस. वहां रह के करको देखो क्या होता है. तो ये सब चीजें, ये बच्चा he has to, उसके पेरेंट्स कहीं काम कर रहे होंगे जंगलों में, he has to move around in the forest. So all these things, these people responsibilities on you. इस बंदे को नहीं एडमिशन मिली इंदिरा में, ये वहां चना पोहे बेच रहा है. But if he is there, then the forest will be protected. Otherwise ये पोचर्स के साथ काम करेगा, टिप्स देगा उन लोगों को, यहां टाइगर है, यहां जानवर है, वाइल्ड लाइफ विल बी गॉन. नेक्स्ट, एक लास्ट कंक्लूजन स्टोरी इतनी बताऊंगा. यू ऑल आर, आई एम वेरी हैप्पी कि यू ऑल केम हियर, गिव मी टाइम टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस इन वाइल्ड लाइफ. Don't keep it to yourself. Take it down to those people जो लोग आ नहीं पाए और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया. जैन में एक कहानी है. एक जैन मंक का क्लास चलता है. इन दैट क्लास देयर इज अ थीफ ऑल्सो, एक चोर भी आ जाता है.
और हर टाइम क्लास के बंदों के कुछ ना कुछ चीजें चुरा के भागता है. सो एवरीबडी नो देयर इज अ चोर इन दिस क्लास. वन डे दे कैच दैट थीफ एंड वो बोलते कि इसको हकल दो क्लास में से. देन दैट मंक सेज कि नहीं यार ये रहेगा क्लास में. तो सारे लोग बोलते हैं सब बॉस कि गुरुजी आप इसको ये चोर को कैसे हम इसके साथ कैसे बैठेंगे. वो गुरुजी बोलता है कि इसको मेरे क्लास की सबसे ज्यादा जरूरत है. आप लोग तो चोरी करना गलत है आपको पता है सबको मालूम है इसलिए आप यहाँ हो. इसको ये मालूम नहीं है इसके लिए मेरा क्लास है. ये अकेला यहाँ बैठेगा बाकी सब गए तो भी चलेगा मैं इसको ही सिखाऊंगा. सेम वे आई एम नॉट सेइंग यू आर चोर. You are good chore in right way. You have understood importance of wildlife and that's why willingly you have joined this nature club. बाकी जो 5,000 बंदे हैं ना बाहर घूम रहे हैं उन तक पहुंचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सब. आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये जंगल सिखाता है ये कोएग्जिस्टेंस सिखाता है. एंड लास्ट थिंग कमिंग बैक टू द कंक्लूजन आई विल से व्हाट जंगल हैज गिवन मी फॉरेस्ट हैज गिवन मी इज अ रिस्पेक्ट. नॉलेज वन थिंग रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एज अ बिल्डर शायद ही मुझे कोई यूनिवर्सिटी बुलाती थी बिल्डर के लिए लेक्चर देने के लिए. फाइन आई एम इंजीनियर आई एम प्राउड ऑफ इट एंड I never say I am ashamed of my profession because I do it in my way. But builder करके मुझे जो reputation और recognition कभी नहीं मिला वो as a wildlifer मिला. That is what forest is. सिर्फ उससे associate होने से कितना अच्छा हो सकता है. And if you make it forest as your career, nothing like it. I am thankful to you for listening all the time and will be happy to assist, join hands on any way and to answer you anytime, not this time. Thank you very much.